Good morning class, welcome to ST.PETERS school. This is your science class, and in previous class we were doing question and answer, and we have done almost all the question and answer. Very few questions are left now, so let's finish all the question and answer today. Okay, so we have to start with question number 6, and previous class we have done already up to the question number 5. Now question number 6, write answer to the following. First question is, what are the parts of plant? Okay, so this is very easy question. You can write it in your own word also, but still I have given you the answer. So let's read out the answer very fast. The various part of the plant is okay. I require that you should add a complete picture of plant with all the labeled part. Whenever you will write the answer for this question, you also have to draw the diagram for this answer. Okay, like you have to give the picture, and in the same way you have to explain all the parts. So first part is root. The various part of the plant are roots. Root grows below the ground surface. Yes, we all know from our childhood that where the root grows in the ground surface. Roots hold the soil firmly and anchor the plant. They absorb water and minerals from the soil. So first of all, what is the use of root? Root दो तरीके से help करता है. First, it keep the plant very erect. सीधा खड़ा रखता है, उसको मजबूती से एकदम सीधे खड़े रखता है. रूट्स जितने स्ट्रांग होंगे, ट्रीज उतने इरेक्टली खड़े होंगे. सो दैट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ रूट. They absorb water and minerals from the soil. So this we already know about from our childhood only. Ki what is the work of root? To absorb water and minerals from the soil. So that's why root is one of the very important part of the plant. Stem. Spread out branches to bear leaves. Actually, all the parts of the plant is very important. Like our human body, all the parts are very important. Hand is too important, leg is too important, eyes, nose. So in the same way, all the parts of the plants are very important. So another important part is stem. Spread out the branches to bear leaves, flowers and fruits. Conducts water and minerals to different plant parts and perform function of storage, support, protection and vegetative propagation. Okay. Very first use of the stem is to bear the branches. जो सबसे ज़्यादा लोड करता है that is stem only. Stem बहुत सारे branches को अपने ऊपर carry करता है. Okay. Spread out branches. The work of the stem is to spread out the branches, flowers and fruits. Okay, some branches are also having flowers and fruits, so they spread out the branches. अगर एक ही सीधा वो बढ़ती जाएगा, suppose if the stem will continue to grow very only in a one direction only, how the trees will look? If they cannot survive, right? उसको हमेशा उसको एक support की जरूरत होगी. But what happens? Stem spread their branches to balance themselves. Conducts water, yes. Whatever the root used to absorb water and minerals from the soil, now stem acts as a transporter. वो transporter की तरह काम करता है. वहां से water and minerals वो they took the water and minerals from the root and then they carry through their tube and then they provide to all the branches. Okay, वो different part of the plant को सारा खाना और जो पानी होता है they used to provide them. Storage. Also stem is used as a storage when there is a scarcity of water. Like हम एक बार सुबह पानी देते हैं, एक बार शाम को पानी देते हैं, तो it doesn't mean कि plant only require 2 times water, but yes, one time if you will provide, they will the stem used to absorb it for the long time, store it for the long time. Support, protection, yes, protection. Stem also provide protection like स्टेम्स के हार्ड कोट होते हैं एवं उसके प्लांट उसके ऊपर हार्ड कोट होता है जिससे वो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस कम करता है, या फिर दे कैन नॉट इजिली ब्रेक दैट आर वेरी हार्ड एंड हार्डर फ्रॉम द आउटसाइड. वेजिटेटिव प्रोपगेशन, लाइक sometimes new plant also grow from the stem. It's a type of रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कुछ प्लांट जो होते हैं वो फ्लावर और फ्रूट्स नहीं होते उसमें, तो वो न्यू प्लांट्स कैसे डेवलप करते हैं? थ्रू इट्स एक वन डेफिनेट पार्ट, कोई एक अपने पार्ट से
वो न्यू प्लांट को ग्रो करता है. Leaf is a flat. The leaf is a flat. Yes, we saw the structure. Most of the leaves are flat in structure. It plays an important role in production of food. They are called food factories of a plant. Very important term. Leaf is known as the food factory of plant. They carry out photosynthesis, a process by which they synthesize their food. Leaves are of two types, simple and compound leaves. Okay. So when we are studying the chapter, we already discussed about what is the difference between simple and compound leaves. Okay. But what is the main use of leaf? To do the photosynthesis process by which they survive, they prepare the food, they do respiration, right? So this is the work of photosynthesis. Now flower, this is the most attractive part of the plant. It is connected to the stem by stalk, which may be long or short. In plants, flower is functional unit concerned with the sexual reproduction of a plant. Flowers जो होता है वो reproduction में help करता है, most attractive part of the plant. It is connected to the stem by stalk. Okay. Fruits, they have different shapes and contains one or more seeds. फ्रूट्स बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के शेप के होते हैं, बहुत कलर के होते हैं. एंड दे ऑल्सो देयर आर मल्टीपल सीड प्लांट और मोनोकोट सीड और द डाइकोट सीड फ्रूट. ओके, दे आर डाइकोट सीड फ्रूट और द मोनोकोट सीड. जिसमें सिंगल होते हैं उसको मोनोकोट बोलते हैं. डाइकोट मतलब टू या फिर ज्यादा. ओके, नो सॉरी, आई एम सो सॉरी. That is a type of seed, monocot seed and dicot seed. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि some fruits are having single seeded one, but some fruits are having multiple seed. Okay, so what are the function of root? Second question, B part is the function of root are as follows. Roots help in anchoring the plant to the soil. Root ऑल्सो एंकरिंग मतलब उनको डीप करने में हेल्प करता है. जितना सॉइल में वो रूट जितना पेनिट्रेट करेगा सॉइल के अंदर, दे कैन इजिली गेट मोर एंड मोर वाटर एंड मिनरल्स. सो एंकरिंग इज दैट पेनिट्रेटिंग इनटू द सॉइल. सो रूट हेल्प्स इन एंकरिंग द प्लांट टू द सॉइल एंड रूट ऑल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. So two main work of the root: anchoring, keeping erect plant, and root also help in absorption of water and nutrients from the soil. Now C part question is, why is it necessary to classify living things? क्या जरूरी है, क्यों हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, so the classification of plant. While studying the diversity in plant, they are classified for the sake of convenience on the basis of similarities and differences in their structure, their organs and their other characteristics. It is necessary to classify organism because classification is a tool which help us to deal with great diversity. Classification allows us to understand diversity better. Okay, so this is the reason why we need to study the classification. क्यों हमें पढ़ना होता है? क्योंकि ये हमें बताता है उसकी हिस्ट्री के बारे में, कितनी डाइवर्सिटी इसमें आती है. दैट वी कम टू नो व्हेन वी स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, कि इसके कितनी फैमिली है, कितने इसके ब्रीड आ सकते हैं. सो ऑल द इन्फॉर्मेशन बेसिकली हम जो बोलते हैं ना कुंडली निकालना, दैट इज ओनली द क्लासिफिकेशन. हम किसी चीज की कुंडली निकालते हैं, प्लांट की कुंडली निकालते हैं, तो हमें क्या पता चलता है? उनके बहुत सारे जनरेशन के बारे में पता चलता है. व्हाट इज द मॉडिफिकेशन अडेप्टेड बाय दैट पर्टिकुलर प्लांट, वो भी हमें समझ में आता है. सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. किसी की कुंडली जान के हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा, सो दिस प्लांट कम्स टू दिस फैमिली एंड दिस प्लांट ये ऐसा सीड देगा, ऐसा फ्रूट देगा, एंड दिस प्लांट रिक्वायर दिस कंपोनेंट मोर, दिस प्लांट रिक्वायर दिस कंपोनेंट लेस. सो उससे हमें उनकी फीचर्स पता चलते हैं. इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन मतलब ये कौन सा प्लांट है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये सब हमें पता चल जाता है. वो क्लाइंबर है या क्रीपर है, राइट. क्लासिफिकेशन हेल्प अस टू लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर फीचर्स, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. तो अभी मैंने वही बताया कि फीचर्स उसके पता चल जाते हैं उससे, कि सिमिलैरिटीज क्या है. तो मान लो कि टू फैमिलीज हैविंग टू डिफरेंट ब्रीड, तो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ डाइवर्सिटी, राइट. कि अगर उसकी फैमिली कम है बट इट इज नॉट अ डिफरेंट प्लांट, इट इज जस्ट द डाइवर्सिटी इन द सेम प्लांट. मतलब मान लो कि दो, दे आर टू डिफरेंट प्लांट ऑफ टू सेम फैमिली, बट
हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो हमें क्या समझ में आएगा कि दे आर ऑफ द सेम फैमिली बट देयर इज अ डाइवर्सिटी, उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है, इसमें ये चेंजिंग हो गया, राइट, या इसमें वैरायटी आती है, राइट. वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट द वैरायटी इन द पर्टिकुलर प्लांट. It enables us to understand how complex structure of organism evolved from the simpler. कैसे complex structure से simpler आया है. What is the modification adapted by that plant to survive or to ease itself. Okay. To understand and study the features, similarities and differences between different organisms, they are grouped under the different categories of living forms. वही हमने बाद में उसको बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किए. कभी किसी को फैमिली के बेसिस पे डिवाइड किया, किसी को सीड के बेसिस पे डिवाइड किया, किसी को उनके सर्वाइवल के, जैसे पेरिनियल, एनुअल, कि कुछ प्लांट सर्वाइव करते हैं 1 ईयर के लिए, कुछ प्लांट हमेशा सर्वाइव कर पाते हैं. सो after knowing the classification of the plant, then we come to know about all these points. Classification ensures the study of interrelationship between the various groups of the plant. ये भी various groups के plant को compare करने के लिए classification help करता है. Now what are the criteria used in classifying living things? क्या क्या क्राइटेरिया यूज किया जाता है? सो ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर, देयर ऑर्गन्स एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा जाएगा? उनके स्ट्रक्चर को देखा है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू लिविंग बींग्स, स्ट्रक्चर, उनके ऑर्गन्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट. प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट एंड द शेप ऑफ द स्टेम, पीरियड ऑफ द लाइफ साइकिल. प्लांट में क्या देखते हैं हम? हाइट देखते हैं, उनकी शेप ऑफ स्टेम देखते हैं, पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल लाइक पेरिनियल, एनुअल एंड हैबिटेट where they can survive more better, like cactus used to survive in a desert, while there are some plants which used to survive in a plain area. Animals are classified on the basis of cell structure, single cell, multicellular, vertebral column के basis पे भी हम animals को divide करते हैं. Some animals are non-vertebral, invertebrate animals. So method of reproduction is also the type of, कुछ ले एग करते हैं, कुछ ले कुछ some animals used to lay young ones. So on the basis of we used to do the classification. That's all for today. In next class, I think few questions are also still left. So in next class we will cover all that question answer. So till the time, what you are going to do? Start writing question answer in your copy. When there will be assignment section, I will give you to write this question answer in your notebook. So before that only you can start with the writing. Go through all the points, go through the chapter thoroughly so that you can understand all the points, all the questions in better way. So till the time, take care and bye bye.